ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੇਕਰ ਨੱਚਣੇ ਦਾ ਚੱਜ ਹੋਵੇ। ਮੱਕੇ ਦੀ ਕਿਉਂ ਪਾਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਰ ਦੇ ਤੱਕਿਆਂ ਹੱਜ ਹੋਵੇ। ਪੈਰੀ ਸ਼ਿਕੇ ਦੀ ਚਾਂਦਰ ਪਾ ਕੇ ਹੋ ਪੈਰੀ ਸ਼ਿਕੇ ਦੀ ਚਾਂਦਰ ਪਾ ਕੇ ਮਾਹੀ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਹੀ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ। ਵੰਗਾਂ ਯਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਹੋ ਵੰਗਾਂ ਯਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਮਾਹੀ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਹੀ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਈਏ ਸੋਹਣੀ ਵਾਂਗੂ ਯਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਚੀਰ ਚ ਨਾ ਲੰਘ ਜਾਈਏ। ਉਹਦੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਓਏ ਉਹਦੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮਾਹੀ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਹੀ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ। ਯਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਭੇਸ ਬਟਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਹੀਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਰਾਂਝੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਕੰਨ ਪੜਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪਰਦੇ ਸ਼ਰਮ ਬਾਣੇ ਲਾ ਕੇ ਓਏ ਅੱਜ ਪਰਦੇ ਸ਼ਰਮ ਬਾਣੇ ਲਾ ਕੇ ਮਾਹੀ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਹੀ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ। ਨੱਚਣਾ ਨੱਚਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਏ ਪਰ ਸਾਡਾ ਨੱਚਣਾ ਵੱਖਰਾ ਏ। ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਲੈਣਾ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਏ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਲ ਚੋਂ ਭੁਲਾ ਕੇ ਹੋ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਲ ਚੋਂ ਭੁਲਾ ਕੇ ਮਾਹੀ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਹੀ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਹੀ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ। कर सबके दिल पे अब तू काबू कर रिश्ते में हम तो बाप लगते तुम्हारे बैठ जा छोटे ना तू चाचू कर जो मैं करता हूँ आ तू कर बैंग बैंग निकी में है 4 वूफर और मेरा कोई कंपटीशन नहीं बैठ बैठ जा बेटे मत मत मेरा खा तू सर जा तू भर मेरा कप थोड़ी चाय लेके आ थोड़ी फिश फ्राई लेके आ थोड़े पकोड़े भी ला थोड़ी बटर चिकन थोड़ी तंदूरी चिकन है थोड़ी फ्रेंच फ्राई लेके आ
अब ड्रामेबाजियां तेरी ना तू कर, हाँ जादूगर मैं हूँ जादूगर, जादूगर जादूगर जंतर मंतर करके तेरा जादू कर, जादूगर तू जादूगर जंतर मंतर करके तेरा जादू कर, जादूगर जादूगर जंतर मंतर करके तेरा जादू कर, जादूगर तू जादूगर जंतर मंतर करके तेरा जादू कर। ईमान ज्यादा इनाम ज्यादा मैं डॉन दादा सबसे टॉप लाला पाला मैंने इनको पाला काला फूका काफी काला ज्वाला ज्वाला मुझमें ज्वाला 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 काफी ज्वाला किया सब मैंने हाँ खुद से लिया सब टेंशन हाँ खुद पे चलते ये सारे हैं मुझसे फालतू के देते ये नुस्खे रख तेरा ज्ञान तेरे पास तू अनजान तू ना खास तू ना काम नकल बाज छोड़ हराम बदल आज कहते कम हम तो सारा करते किसी से न डरते हम सीधा देखो करते कहते कम हम तो सारा करते get it done बातें कम काम ज़्यादा we don't want वादे कम काम ज़्यादा no वचन बातें कम काम ज़्यादा where I'm from बातें कम काम ज़्यादा बोलो कम करो ज़्यादा हेड बोले टाटा टाइम कम बुश ज़्यादा तो क्या है इरादा अंडरग्राउंड गॉड मचा प्रोसेस मचाता बढ़ता मेरा खाता बढ़ते ऊपर जाता हंसता मुझ पे जो वो है अब पछताता फायर स्टार्टर घातक राडा भलती ट्रिप्स कैसे तो बच के भागा डॉन दादा कर दिया वादा तो निभाता लाता कहर ये पूरा शहर है मेरा इलाका कहते कम हम तो सारा करते कम बम किसी से न डरते हम सीधा देखो करते कहते कम हम तो सारा करते get it done बातें कम काम ज़्यादा we don't want वादे कम काम ज़्यादा no वचन बातें कम काम ज़्यादा where I'm from बातें कम काम
8:08 हुए हैं. कैमरा ठीक कर दूं यार, मैं थोड़ा सा नोटी हो गया लगता है कैमरा. या ओके, सो 8:08 हुए हैं. आज क्या तारीख है? आज 9 फरवरी 2023 है और हम लोग सिडनी में बैठे हैं और सिडनी में बाहर गर्मी है और मेरे अंदर ठंड है. सो आई एम सिक, आई हैव गॉट द फ्लू. लेकिन मैंने सुना है कि अगर आप मेरी बात सुने रेडियो पर या फेसबुक पर तो आपको कोई इन्फेक्शन नहीं होगा. मैंने टेस्ट कर लिया, कोविड भी नहीं है. सो यू विल नॉट गेट इन्फेक्टेड, बट आई हैव टू बी हियर. सो क्योंकि अगर मैं यहाँ नहीं होऊंगा तो मैं ठीक कैसे होऊंगा जल्दी. आपसे बात करके आई फील गुड एंड यही मेरा इलाज है. कोई दवाई नहीं, कोई पैनाडोल नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन आपसे बात करके ये मेरा इलाज है कि मैं ठीक हो जाऊंगा और आप भी ठीक रहेंगे क्योंकि आप मुझसे दूर दूर से बात कर रहे हैं. सोशल डिस्टेंस एंड मोर, बहुत दूर की डिस्टेंस आपने रखी है जिस्मी तौर पे. लेकिन यस, ममता जी हमारे साथ हैं, ममता कोडे शीर्षक जी, एंड ऑफ कोर्स मयूर विक्रम. अरे भाई बड़े दिन बाद आए हो, कहाँ छुपे हुए थे यार मयूर. एंड तौफीक इज़ ऑल्सो वॉचिंग, सो थैंक यू तौफीक. एंड आज हम लोग तौफीक से भी बात करेंगे. ये हमारी खुशकिस्मती है. वो गरीब स्टूडियो में आना चाह रहे थे लेकिन मैंने भगा दिया. मैंने बोला नो 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 नो, ये मुझे इन्फेक्शन हो ही ली है, अगर तेरे को भी हो जाएंगी तो फिर क्या करेंगे. बोलते नहीं यार, मेरे को सैटरडे को ड्रामा है, वो नाटक करने का है, तो इसके लिए वो बोल रहे ला कि मेरे को नहीं करना है. सो इधर नहीं आ रहे हैं, ठीक है. सो गुड डिसीजन तौफीक. एंड ऑफ कोर्स एवरीबडी लव्स एंड ऑफ कोर्स आतिफ डंग साहब इज़ ऑल्सो वॉचिंग. पिछले हफ्ते हमने आतिफ से बात करी थी अबाउट दिस अदानी अफेयर, क्योंकि उनको कुछ थोड़ी बहुत ज़्यादा समझ है हम लोगों से. वो फिनेंस की इंडस्ट्री के बेताज बादशाह हैं, बेताज बादशाह आतिफ डंग सिटिंग इन मेलबोर्न. सो या वो सब है. और आज क्या क्या होने वाला है कार्यक्रम में, लेट्स सी. हाँ, ममता जी एंड मयूर लव the शोले ट्रैक and I do not blame you. Thank you. It's beautiful. मैं जब शो, अभी जैसे मेरी आज तबीयत ख़राब है लेकिन फिर भी जब वो शोले की ट्यून सुनता हूँ तो it brings me into the zone. वो जोन में. प्लीज़ ये शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ इस कार्यक्रम को. एंड लेट्स सी, यूट्यूब पे भी कोई थोड़े बहुत लोग थे, आई डोंट नो कौन है क्योंकि यूट्यूब पे नाम बताते नहीं हैं वो लोग. सो यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ लेट अस नो. वहाँ पे भी कमेंट्स कर सकते हैं. वी कैन इंक्लूड योर कमेंट्स ऑन द शो. एंड ऑफ कोर्स ममता जी कह रही हैं इंडिया, एंड आई एम श्योर दैट शी इज़ टॉकिंग अबाउट द नेशनल एंथम का जो म्यूज़िक था. सो और बाय द वे, हम लोग कहाँ हैं, ये क्या है, ये कौन है, मैं कौन हूँ. ये है कहते सुनते, और ये कार्यक्रम हर थर्सडे नाइट को आता है सिडनी में 8 से लेकर 10 बजे तक हर हफ्ते. या आज मैं बीमार हूँ फिर भी आया हूँ. कोशिश करूँगा कि जब तक हो सके आपको मैं आपके साथ कनेक्टेड रहूँगा. एंड सो ये 8 से लेकर 10 बजे तक 89.3 FM. हमारा जो स्टूडियो का टावर है उसके अंदर कोई मेंटेनेंस चल रहा है, तो इसके लिए वी आर नॉट ऑन लाइव ऑन 89.3 FM, लेकिन हम लोग ट्यून इन पर लाइव हैं. हम लोग कम्युनिटी ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया की ऐप पर लाइव हैं. और अगर आप 89.3 FM 2GLF की वेबसाइट पे जाएं तो वहाँ पे भी आप इस कार्यक्रम को लाइव सुन सकते हैं. सो और ऑफ कोर्स वी आर लाइव ऑन फेसबुक, वी आर लाइव ऑन यूट्यूब. एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि अगर आज आप किसी वजह से मसरूफ़ हैं, बिजी हैं, तो आपको एंड यू कांट लिसन टू द शो टुडे, यू कांट वॉच इट, यू कैन वॉच इट एनी टाइम इन योर ओन टाइम. सो ये सब है. थैंक यू ममता जी, कह रही हैं कि गेट वेल सून. यस, यही मेरा इलाज है. हाँ, सुरेश मक्कड़ जी इज़ ऑल्सो वॉचिंग. सुरेश जी बड़े दिन बाद आए यार. सुरेश जी हमारे दोस्त हैं लेकिन कभी कभी आ जाते हैं इस कार्यक्रम में बात करने. लेकिन थैंक यू आतिफ, गेट वेल सून. यस, थैंक यू फॉर योर गुड विशेस. ओके, आज चलो मैं म्यूज़िक लगाता हूँ, इसके बाद मैं टर्की एंड सीरिया आई वांट टू टॉक अबाउट दैट. और आज क्या होने वाला है कार्यक्रम में उसके बारे में भी हम लोग बहुत कुछ बात कर सकते हैं. लेकिन लेट्स ब्रिंग सम म्यूजिक इनटू
इनाम ज्यादा मैं डॉन दादा सबसे टॉप लाला पाला मैंने इनको पाला काला फूका काफी काला ज्वाला ज्वाला मुझ में ज्वाला वाला वाला काफी वाला किया सब मैंने हाँ खुद से लिया सब टेंशन हाँ खुद पे चलते ये सारे हैं मुझसे फालतू के देते ये नुस्खे रख तेरा ज्ञान तेरे पास तू अनजान तू ना खास तू ना काम नकल बाज छोड़ हराम बदल आज कहते कम हम तो सारा करते हैं हम किसी से न डरते हैं हम सीधा देखो करते हैं कहते कम हम तो सारा करते हैं बातें कम काम ज्यादा we don't want वाले कम काम ज्यादा लो चल बातें कम काम ज्यादा where I'm from बातें कम काम ज्यादा बोलो कम करो ज्यादा हेड बोले टाटा टाइम कम बुश ज्यादा तो क्या है इरादा अंडरग्राउंड गॉड मचा प्रोसेस मचाता बढ़ता मेरा खाता बढ़ते ऊपर जाता हंसता मुझ पे जो वो है अब पछताता फायर स्टार्टर घातक राडा बल्कि ट्रिप्स कैसे तो बच के भागा डॉन दादा कर दिया वादा तो ने पता लाता कहर ये पूरा शहर है मेरा इलाका कहते कम हम तो सारा करते हैं हम किसी से न डरते हैं हम सीधा देखो करते हैं कहते कम हम तो सारा करते हैं बातें कम काम ज्यादा we don't want वाले कम काम ज्यादा लो चल बातें कम काम ज्यादा where I'm from बातें कम काम ज्यादा सो दोस्तों आप लोग सुन रहे हैं देख रहे हैं सोच रहे हैं कहते सुनते इस कार्यक्रम का नाम है 89.3 FM 2GLF पर और मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली और सो अगर आपने अभी ट्यून इन किया है तो आपको बता दूं कि ये कार्यक्रम 10 बजे तक चलेगा सिडनी टाइम 8 to 10 PM और अगर आप इंडिया में देख रहे हैं तो आई थिंक वहाँ पर 2:30 बजे होंगे यस 5.5 घंटे का हम लोग का फ़र्क है हमारे साथ आपका और तो ट्रेजिकली टर्की और सीरिया में जो भूकंप आया है जो अर्थक्वेक आया है एंड उसका मैग्नीट्यूड देखने वाला है 7.8 ऑन द रिक्टर स्केल और 9 घंटों के बीच में 2 जगहों पर एंड इट इज़ ये कहते हैं कि पूरी सेंचुरी में इतना भारी अर्थक्वेक वहाँ पर नहीं आया और ट्रेजिडी की ये बात है अपार्ट फ्रॉम 12,000 पीपल हैव डाइड सो फार जो टर्की में एंड मई 14 को टर्की में इलेक्शंस हैं सो लाइफ गोज ऑन एंड इतने सारे लोगों का नुकसान हुआ है और मिलियंस ऑफ पीपल हैव बीन अफेक्टेड लोगों का घर एंड बहुत सारे आई मीन ऑफ कोर्स देयर आर फ्यू गुड स्टोरीज एक दो गुड स्टोरीज हैं कि लोग रबल में से निकल रहे हैं जैसे हमेशा होता है बट वेरी वेरी हार्ट ब्रेकिंग स्टोरीज और आज सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड में विलकॉक्स का कार्टून था बट इट नॉट फनी लेकिन उन्होंने साइडिंग विद टर्की और वो बाप की स्टोरी जिसने अपने ही इज़ होल्डिंग हिज डेड चाइल्ड्स हैंड जो कि हु इज़ अंडर द रबल एंड सो वो उसका उन्होंने स्केच कार्टून बनाया है कार्टून इन द सेंस नॉट फनी बट पेइंग ट्रिब्यूट सो इट्स अ वेरी सैड टाइम एंड इसमें ये अच्छी बात है कि इंडिया ने भी एड दिया है टर्की को एंड इट्स इम्पॉर्टेंट क्योंकि जब ऐसी कोई नेचुरल कैलामिटी होती है तो वो किसी को नहीं बख्शती 2001 में इफ़ यू रिमेंबर गुजरात में वी हैड सम ऑफ द वर्स्ट वन ऑफ द वर्स्ट अर्थक्वेक्स दैट इंडिया हैज़ हैड एंड उस टाइम पे बहुत सारे मुल्कों ने हमारी मदद की इवन पाकिस्तान हेल्प्ड अस एंड ऑफ कोर्स वी हैव आल्सो इंडिया हैज़ आल्सो हेल्प्ड पाकिस्तान एंड ये मुझे लगता है कि कम हेल कम स्टॉर्म चाहे कुछ हो जाए ये जो बॉन्ड्स हैं ये नहीं टूटने चाहिए जिस दिन ये टूटने शुरू हो गए कि भाई आपका कोई दुश्मन है सपोजिटली और उस दुश्मन के वहाँ पे कोई
ट्रेजेडी हो जाती है तो क्या आप उसकी मदद करेंगे या नहीं करेंगे? अगर आप इंसानी तौर पर नहीं करेंगे तो आप मुल्की तौर पर भी आपको तकलीफ होगी. एंड आई थिंक कि जब ऐसा कुछ इवेंट होता है तो इट इज़ द टाइम टू फॉरगिव, इट इज़ द टाइम टू फॉरगेट, क्योंकि हम सब इसी प्लानट पे हैं. एंड कई लोग ऐसे गधे भी होते हैं जो बोलते हैं कि अगर किसी के ऊपर कोई मुश्किल का ऐसे टाइम आता है, नेचुरल कैलामिटी, तो बोलते हैं कि जी उनको पाप का उनको मिल गया है. क्या बोलते हैं उसको, अपने पापों की वजह से ऐसे. एंड आई फील कि ऐसे लोग बहुत बड़े बेवकूफ़ होते हैं, क्योंकि ट्रेजेडी डजंट वेट फॉर यू. इट डजंट सी कि अच्छा आदमी है, गलत आदमी है, अच्छी औरत है, गलत औरत है. इट अफेक्ट्स लाइफ. हम लोगों को सबको एक जैसा ही अफेक्ट करती है. एंड उस टाइम पे आप अगर हिसाब गिनना शुरू हो जाएं या आप अपना बड़प्पन दिखाना शुरू हो जाएं तो आई थिंक वो एक बहुत जलील बात है. सो आई डोंट नो व्हाई आई सेड दैट, लेकिन इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि इंसानियत है, किसी के लिए भी ये हो सकता है. एंड हम लोगों को एज ह्यूमन बींग्स वी नीड टू रियलाइज कि गुड थिंग्स हैपन टू बैड पीपल एंड बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल. सो लोगों की कोई गलती नहीं है इसमें, कोई पाप पुण्य वो सब बकवास नहीं है. ये दीज आर रैंडम इवेंट्स होते हैं एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट. बट द लीस्ट वी कैन डू इज़ टू फॉरगेट कि क्या हुआ है एंड आगे जाएं और मदद करें. एंड रेनू सिंगल जी, कैसी हैं आप? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. सो बट या आई डू, व्हाट डू यू थिंक? डू यू थिंक ऐसी दुश्मनी निभानी चाहिए कि जब दुश्मन के ऊपर कोई भी ऐसा मुश्किल टाइम आए तो वी शुड वॉक अवे, और डू यू थिंक ऐसे मौके पर दुश्मन से यू शुड फॉरगेट योर एनमिटी एंड वहाँ पर जाकर इंसानियत दिखानी चाहिए? हम लोग तो कोई जानता भी नहीं है तो हम लोग उसकी मदद करते हैं, लेकिन कई बार मैंने देखा है कि दुश्मन हैं तो लोग वो दुश्मनी पता नहीं कहाँ तक, और दुश्मनी भी क्यों पता नहीं है कहाँ तक निभाएंगे. सो और उसमें ऑब्वियसली हम लोगों ने इस फॉरगिवनेस वगैरह की बहुत पहले भी बातें करी हुई, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान आप ही को होता है, नॉट दैट पर्सन, क्योंकि वो तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी के तले दबा ही हुआ है या दबी हुई है, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं क्योंकि वो उनका तो दे हैव गिवन अप. लेकिन आप जो है आप अपने आप से जूझते रहेंगे. एंड ये अतीफ जी कह रहे हैं कि fully agree, my grandfather used to always say when tragedy befalls even enemy should be treated as family member. Fights can wait but humanity should always be given priority. Isn't that beautiful? Isn't that beautiful? Thank you Atif, that's a very beautiful message. Yeah. और I remember हमारे एक दोस्त थे, कॉलेज में हम लोग पढ़ा करते थे, एंड हिज मदर डाइड. एंड ठीक ठाक थे, मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग रोज़ दोस्ती थी हमारी, बट या वी एक्सपेक्टेड कि हिज मदर डाइड, तो वो हमें इन्फॉर्म नहीं किया उसने. लेकिन जो हमारी क्लास की लड़कियां थी उनको इन्फॉर्म कर दिया उसने. सो आई वॉज वेरी एंग्री. मतलब यार ये कैसा बंदा है कि अब हम लोग इसके साथ बात करते हैं और ये हम लोगों के साथ ही डिडंट इवन शेयर दिस. एंड मैंने डिसाइड किया कि मैं नहीं जाऊंगा उसके घर में. सो मेरे दोस्त के फादर थे एंड उनसे मैं ऐसे बोल रहा था कि ऐसे हुआ, एंड ही सेड बेटी की शादी किसी के या किसी के घर में मौत, इनविटेशन की नहीं वेट करते बेटा. एंड आई थॉट दैट इज़ ब्यूटिफुल. आई वॉज वेरी यंग उस टाइम पे, एंड मुझे लगा एंड दैट चेंज द वे आई लुक्ड एट थिंग्स, एंड आई थिंक दैट वाज अ ब्यूटिफुल थिंग. और ऐसे वाले लोग हैं जो लाइफ में आपको कोई बात ऐसी हो जाएगी और आपको they will say something that stays with you forever. और वो बहुत पुरानी बात है, आज से 30-35 साल पुरानी बात. और मुझे फिर भी याद है कि अंकल ने ऐसे कहा था कि लड़की की शादी और किसी की मौत, आप वेट नहीं करना, वहाँ पे जाके हेल्प कीजिए. एंड सो या दैट्स दैट. एंड ऑफ कोर्स जब काम ख़त्म हो जाए, जब आप हेल्प कर दें, उसके बाद जतलाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपने ये किया है, और आपको पोस्टर छपाने की भी ज़रूरत नहीं है कि आप कितने बड़े दानी और बड़े दिल वाले हैं, उसकी भी ज़रूरत नहीं है. काम कीजिए और आगे बढ़िए. एंड दैट्स ऑल आई थिंक. बट गुड थिंग बिकॉज द होल वर्ल्ड इज़ कमिंग टुगेदर. एंड आई एम सीइंग सोशल मीडिया पे कई लोग बोल रहे हैं कि ओ
टर्की ने इंडिया के साथ ऐसा किया था, फिर भी हम कर रहे हैं, हम बड़े हैं. एंड आई एम टेलिंग देम कि यू आर इडियट्स. ये कोई ज़रूरत ही नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं. अभी जैसे पीछे मोदी जी की मदर की मौत हुई, तो राहुल गांधी एंड शशि थरूर एंड जो कांग्रेस, जो उनके पॉलिटिकल जो जिनकी दुश्मनी है उनके साथ, पॉलिटिकल दुश्मनी, उन्होंने भी दे commiserated and they gave him their condolences, and I think that's a good thing. But anyway, that's not. आज क्या क्या होने वाला है कार्यक्रम में? आज क्या क्या होने वाला है? आज बाबू गोगिनेनी आएंगे. You'll remember him. He's a very learned person. और उनके साथ हम लोग बात करेंगे कि भाई इंटॉलरेंस क्या दुनिया भर में बढ़ रही है क्या. नीरज नंदा जी दिल्ली से रिपोर्ट फाइल करेंगे आज. तौफीक आएंगे आज. ही इज़ गोइंग टू टॉक अबाउट द प्लेज, अविजीत सरकार स्टोरीज, क्रॉसओवर स्टोरीज, जो 17th and 18th को प्लेज हो रहे. 5 प्लेज रिटन बाय अविजीत सरकार एंड 5 अलग अलग डायरेक्टर्स और 27 एक्टर्स हैं लोकल सिडनी के. और ये बैंक्सटाउन में हो रहा है 17 और 18 फरवरी को, नेक्स्ट वीक. एंड आई विल बी टॉकिंग टू तौफीक कि कैसी जर्नी रही, क्या हो रहा है ये सब. एंड ऑफ कोर्स फिर क्रिस, मल्लिका भद्रा भी आएंगी. एंड मेरे पास आई वांट टू टॉक अबाउट दिस फैंटास्टिक डॉक्यूमेंट्री दैट आई सॉ ऑन नेटफ्लिक्स. लेकिन उसके पहले अगर आपके पास में कोई रिकमेंडेशंस हैं मूवीज़ की तो बताइए. अगर आपने कोई फिल्म देखी है जो कि आपको आप पे इम्प्रेशन किया है. या ममता जी कह रही हैं कि वेल सेड मनबीर जी, थैंक यू फॉर दैट, फॉर एग्रीइंग. एंड आई एम श्योर हम सब वैसे ही सोचते हैं, मैंने सिर्फ बोला है. हेल्प एंड रेनू सिंगल जी कह रही हैं कि हेल्प करने से कभी कभी दुश्मनी ख़त्म भी हो जाती है. बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. और ये मेरे पास एक और एग्जांपल है. 1984 की बात है, 1984 के जब दंगे हो रहे थे, तो आई वॉज इन पूना. और वहाँ पे इतना ज़्यादा ड्रामा नहीं हुआ, लेकिन आई वॉज पर्सनली अफेक्टेड. और मेरे एक दोस्त हुआ करते थे प्रसाद, और प्रसाद से मेरी कुछ अनबन हो गई, जैसे होता है कॉलेज के दिनों में. एंड कुछ हम लोग बात नहीं करते थे एक दूसरे से. लेकिन प्रसाद वॉज द ओनली गाय जिसने आके मेरी मदद की, और उसने पूरा मुझे ये सॉल्व कराया, क्योंकि मैं तो वहाँ से भागने के चक्कर में था अपनी पढ़ाई छोड़ के. लेकिन प्रसाद ने, हम लोग बात भी नहीं करते थे, एंड उसने मुझे एक सबक सिखा दिया कि दिस इज़ लाइफ. ये जो दुश्मनियाँ और ये जो नाराज़गियाँ हैं ये परमानेंट नहीं रहनी चाहिए. यह हुआ, निकले आ गए. एंड आज तक हम लोग वी आर गुड फ्रेंड्स. लेकिन हमारी दोस्ती में कुछ दरार आ गई थी, लेकिन ही स्टिल हेल्प मी. सो मैंने तो जूते खा खा के लेसन सीखे हैं. ठीक है, क्योंकि हम लोग जब जवान होते हैं तो बड़े एरोगेंट होते हैं. तो उस टाइम पे अगर कोई समझा दे, जो जैसे मुझे समझने का मौका मिला, सो वो अच्छी बात हो जाती है. एंड आई एम रियली थैंकफुल टू प्रसाद, टू माई फ्रेंड्स डैड, जिन्होंने बहुत सारे अच्छी लेसन्स दी मुझे और थोड़ा सा इम्प्रूव करने का मौका दिया. कहते सुनते, मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली, और इसके बाद मैं तौफीक अहमद शेख को लेके आएंगा.
बिलीव मी, मुझे पता ही नहीं था ये गाना क्या है, लेकिन जो मैंने बात की वही उसके साथ मैच करता हुआ गीत अपने आप से लग गया. एंड दिस इज़ व्हाट हैपन्स कई बार, कि हाउ एवरीथिंग लाइंस अप. मैंने कुछ नहीं किया बट वो गाना बड़ा रेलेवेंट सा बन गया. एंड सोलफुल सोनू इज़ वॉचिंग. सोलफुल सोनू इज़ डूइंग मोटिवेशनल वीडियोज़ दीज डेज ऑन फेसबुक. एंड सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सोनू जी. आई होप यू कंटिन्यू with your good work. And कई बार मुझे ना I'm a cynic. मुझे लगता है कि हम लोग बहुत सारी मोटिवेशनल बातें सुनते हैं, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है इसका. बट वॉट आई डू रियलाइज कि हो सकता है बहुत फ़र्क ना पड़े, लेकिन अगर थोड़े से भी लोगों को फ़र्क पड़ जाए तो भी आई थिंक इट्स अ गुड थिंग. सो आई एम स्केप्टिकल ऑफ, क्योंकि लोगों ने चेंज तभी होना है जब वो रेडी होंगे, और कभी वो रेडी होंगे और वो किसको ढूंढेंगे आई डोंट नो. क्योंकि मैं तो अब तक चेंज नहीं हुआ भैया. मैं जैसे था मैं वैसे ही. ओह ओके, बाबू इज हियर. चलो लेट्स टॉक टू बाबू. ओके, दैट्स गुड. बाबू, थैंक यू फॉर कमिंग. कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी बाबू? Yes, I ओके, can. गुड 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 गुड. मैं तौफीक की वेट कर रहा था बट आप आ गए एंड दैट्स ओके. That's all right. So I'll ask Taufeeq to come in later. That's good. Okay. So we have spoken to Babu in the past. Babu is he's a journalist. He does a lot of appearances on television. He's an activist, and he's got a science background. So Babu, welcome to Kehte Sunte. Thank you. What are we going to talk about today? You said, is intolerance increasing around us? What do you mean? Yes, I am. The trigger for me is the huge number of newspaper reports that are coming in, often sensationalized, because nothing is being done about these incidents, and that is physical violence and verbal violence against groups of people, against people who are not like you. So I wanted to examine whether this really is more of intolerance or more of reporting of what is happening and more of inaction by the authorities. I have here in mind India mostly, but intolerance is the feature of the modern world because culturally we are not, as members of the human race, we are still not trained to accept differences or to negotiate them in peaceful democratic means. Babu, before you go ahead, I want you to define what do you mean by intolerance? And tolerating somebody, isn't that a bad thing to do? To tolerate, that I tolerate you, rather That's than, right. you know, accept you as me, as part of me, as that, वो कौन से बाबा जी हैं आजकल जो बोलते हैं me is not me looking at me, तो वैसे वाला. I think we need to understand that you and me are equals. Not, I don't have to tolerate your inequality, but I have to accept your equality. I think one thing we have to not tolerate is intolerance. About that, there should be no second thoughts. But you make the very important point, Manbir, that tolerance assumes that somehow I have the power to do something to you and I am not exercising it, even though we don't agree. So at an individual level, it might just be disagreement or irritation about someone else's identity, language, ideas, or just that person's presence in society. But when a lot of individuals get together, then that becomes toxic. But why single out India? I mean, if you look at some of the worst intolerances that have happened, I mean, apart, of course, India has had the caste system, but if you look at South Africa
And I remember when we spoke a few weeks ago, you spoke about, say, Japan and some other societies also. So why single out India? Why? What is this? To start with, at least half my life experiences are linked to India. Okay. That's me as an Indian of origin and identity, cultural, philosophical. So Okay. there is this knowledge of India and also an affinity to the country. Okay. So That makes that's sense. one. That makes sense. But at a global level, we are talking 1 in every 6 human beings alive on the planet is from India. Correct. From the Indian subcontinent, between 1 in 5 and 1 in 6 humans lives there, struggles there. Therefore, South Africa is a small population. It's a country. Yes. There are 60 Islamic countries, Yes. but all their populations put together would not be the equal population of South India. Correct. So we're talking Correct. huge numbers. So the reason I wanted to look at whether there is more intolerance in India and so on was I wanted to find objective measures, not simply newspaper reports. But we go back to your very important question. What is this thing about tolerance? Tolerance is not positive, it is negative. The whole concept, ideas, talking about tolerance Yes. came up with the great thinker, rationalist, essayist, polemicist from France, Voltaire. Now, Voltaire did something extraordinarily important. People may have heard about Jean Callas. Jean Callas, Callas, was a Protestant in Catholic France. And his eldest son, who was considering converting to Catholicism, actually committed suicide. Ooh. Okay. So, society in France at that time then said the father killed the son because he did not want him to become a Catholic. He was so falsely accused and killed as punishment by a 13-judge bench. The great Voltaire came across this story. These things happened in 1762. And he led an extraordinary campaign. It started with his great essay on tolerance. Okay. It was for the first time that at a cultural, societal level, the idea of tolerance was picked up for discussion, examination, and inviting people to be tolerant. Why? Because simply holding a different religious identity or converting to it could lead you to be killed. That was a society in which tolerance was being advocated. Because it was an attempt to attack religious fanaticism. So we have to look at it as fanaticism and tolerance. These were the two things available, and Voltaire was advocating for tolerance. So it's an extremely positive thing Absolutely. in the context in which it was proposed. Yes. But this happened in the 1760s. Jean Callas was rehabilitated 3 years after, and Voltaire's campaign, Écraser l'infâme, crush the infamy, and his essay on tolerance was the foundation, really, of the modern democratic principles and ideas of tolerant, if you want, peaceful coexistence amongst people, to negotiate their differences in amicable manners,
and implement that through law. Now, there is an International Day of Tolerance sometime in November, because precisely for the reasons you invoked, all over the world, there is a huge amount of intolerance. South Africa, that you mentioned, there are groups of people who do not like each other. It's not a well integrated society, whichever society you look at. But some have done a better job of it than others. There is no doubt about it. I think, despite all this anguish, talk, and experiences of many people of racism in Western Europe, my experience is that Western Europe has learned to live with its differences better than others. And you lived in Europe, haven't you? I have for many years. I have worked and lived there. I've not with great insight, but I have been in Africa too. I have a notion of how things are. And I see that peaceful negotiation is now largely the culture of Western Europe. Sadly, and that's the reason I keep thinking of India, because it's my country, it's yours, it's ours. Yes. And it's 1/5 of humanity's. If things go wrong there, then humanity suffers. So I want to teach myself whether this intolerance is real or it's over-reported. Before you go ahead, I've got a couple of comments. So Sonu has written that intolerance is different to compassion. People are being less compassionate, and this less willing to compromise, make finer adjustments with each other. That's a good point. And Taufeeq is saying, why are atheists intolerant to religious people? Yeah, good point. Yeah, we see intolerance even there. Number one, absolutely an important thing. Compassion is a biological trait. It's not simply cultivated within a civilization, it's a biological trait. Correct. As to the second one Taufeeq asked, I disagree. I don't see atheists being intolerant. It is that when an atheist expresses his or her opinion, the religious feel attacked. They feel attacked because right from birth, they have been brainwashed into the absolute truth of the beliefs that they have got. When you're born, the azan is read or sounded in your ear. It starts from there. As a baby, you're taken to temples, you're tonsured, you are told to fear God. So when you do that for 15, 20 years with no possibility of thinking of the alternatives, and when someone says, I don't believe in what you do, people consider it an attack on them. An affront. Okay. Now, let's also pick up that challenge Taufeeq has thrown at us. Look, in the Islamic world, there are no atheists, right? If they are silent because you will kill them. Blasphemy laws. Because you will behead them. Because you will say blasphemy, you will eliminate. So if there are atheists, they are silent, or they are saying nothing. So we have not many reports, except for people like Mubarak Bala and others who've been given 25 years imprisonment for expressing disbelief in the existence of God. Now, who is attacking who? All I have said, if I were Mubarak Bala in Nigeria, all I have said is I don't believe in a God. I did not come to you. I did not say you should not believe in a God. I did not say I'll put you in prison if you believe in a God. But you put the person who articulated an atheistic belief 25 years of imprisonment. Now, leave the few public atheists aside. Where is the violence in the Islamic communities happening? It's happening between and amongst the Islamic communities. So you are either Shia or Sunni or Ahmadiyya. There's so many. There's not one or two. They're fighting amongst themselves. There are 40,000 denominations of Christians.
You think they agree with each other? You think they are tolerant of each other? But thankfully, they There are not are killing each other, Babu. Yeah, not anymore in yeah, Christianity today. yeah. But if you look at Manbir 500 years ago, Yes, then that was the original Taliban, the Catholic Church. yes. The Catholic Church killed in the hundreds of thousands of people because they did not agree with the Catholic. These are people who still believed in Jesus, but they did not believe in what the Catholic Church said, the representative of Jesus on earth said. So it's a very weak wicket from where to play and say atheists are intolerant. 3,000 odd castes and 4 varnas and not letting people even live together with the others. Now, that's not coming from the atheists. All that the atheists are saying is, I don't agree with your belief that there is a supernatural power. Where is the intolerance there? There is none. There is a rejection of your concept of the universe. Rejection is not intolerance. Look, I can understand what Taufeeq is saying. I think Tawfiq's experience comes from social media, where if you say I believe in this book or that, and there will be people who'll viciously attack and make fun, and like you said, brainwashed, and that's exactly what he's written. He says, doesn't automatically atheists put themselves on a pedestal calling religious people brainwashed? So this taking of a higher position, that I have understood the truth but you haven't understood the truth, is as fickle as I believe in this book but you don't, so you are lesser informed, or if you don't believe in this person, you're going to hell. So I think that's where Tawfiq is coming from, and I see some point in that. I thank Taufeeq for leading the conversation in this way. But look, how is it that only Muslims are born to Muslims? Only Hindus are born to Hindus? It's a coincidence. Only Christians are born to Christians? It's a big Why is that coincidence. happening? No, of course, we know that. Why is Look, that happening? It's absolutely. happening Yeah. because you are brainwashed into this identity. There's no second word for describing it. Yes. Now, if nobody is born Liberal Party, nobody is born Labour Party, nobody is born Greens, Yes. but you're born Hindu, Christian, Muslim, Sikh, Yep. Buddhist, and Jain. True. And so you have decided the nature of the universe, its origins and morality, before you were even able to read anything. Now that's brainwashing. I mean, you may not like the word, but you have been subjected to it. Now, if you said at the age of 18 or 20, I have examined these questions and I have accepted the conclusions of a religion, that's fine. Yeah. Then it's an informed, relatively mature conclusion about these things. So I do want to go back to this idea that atheists are intolerant. Atheists are the biggest victim group despite their numbers. Now, if you look at, I used to be director of an organization which publishes from Europe the Freedom of Thought report. Because what is being an atheist? Being an atheist is exercising the right to thinking. And you have come to a conclusion and you have expressed it. Yep. In many countries of the world, simply being an atheist will lead to you being killed by law. Yep. You will be beheaded, or in Saudi Arabia, atheists are called terrorists by law, by royal decree. Atheists are called terrorists. Now, who is performing the violence here? Look, don't pick up the victim. And because the victim has spoken maybe rudely, now and then, maybe to you, you should not call them people who are intolerant. A victim group requires sympathy. Four very important rationalists, humanists, atheists. No, actually, one of them was not even an atheist. In India,
there is Dr. Dabolkar, with Yes. who I work. Oh, There you worked with him? is, yes, He was a rationalist. Yeah, he was killed. that's right. Yeah. He was assassinated because he was advising people to not make mistakes and be cheated because of superstition. Now, many religious people have considered, I'm not saying Taufeeq is doing that, but many people have found it as an offensive attack on their beliefs, and they have responded. Atheists, humanists believe in dialogue, in examining facts, and looking at what might be the best conclusion about any question. They killed Dabolkarji, they killed Govind Pansareji, they killed the Vice Chancellor, retired Vice Chancellor, Professor Kalburgi, who was actually not an atheist, though he was inclining towards a most liberal interpretation of religion. And there was also Gauri Lankesh, who was also assassinated outside her house. Someone I work very closely with, Professor Narendra Nayak, his name was revealed in a shortlist prepared by the same assassins who killed all these 4 people. All of them used the same weapon. Now, this is the important thing. The same weapon was used over 2 years for 4 assassinations. Their diaries had my close friend, senior colleague, Professor Narendra Nayak's name there. Also 2 or 3 religious liberal people. Now, in any society, if religion is dominant, then you will find people who will be intolerant. All this eyewash, you don't want brainwash, so I will say eyewash, of tolerance being promoted by religion is not true. Now, it's all right to say you're a tolerant religion, you're peaceful, and so on. But a simple examination of the books that are holy for those religious people tells you that that's not the case. Look, in every religious book, the atheist is punished in the world now and later is tortured after death. Yeah. There is no religion which says the atheist can live all right in this world or in the world after death. So this is all my response to Taufeeq, because it's a misrepresentation of the position of a victim group. But I want to, Manbir, tell you about what I discovered looking at the statistics about intolerance. Okay. And that leads me to an important conclusion for myself. Yep. It is this. Pew, PEW, Pew Yes, Center, Pew Research, yeah. does a lot of research. So that's the Pew Research Center. And one of their researchers was just before COVID and slightly into COVID in India. They interviewed 30,000 Indians, 30,000. Yes, I mean, for a nation of 1.4 billion, that's not a lot, but it's a sample. Yeah. At least it's more than we asking our friends. Yeah. With a scientifically selected sample. And this is what, for me, is most impressive. In India, 91% of Indians, 91% Indians are saying they are free to practice their religion. Okay. Now, of course, 9% have not said it. And when you extrapolate it to 1.4 billion, that's a lot of people. Correct. But 91%, and that's a very significant majority, I agree. have said they feel free to practice their religion in India. Now, there are 91% Hindus in that. There are 89% Muslims saying that, 89% Christians saying that, and 82% Sikhs saying that. So a significant number of people in India, as found out through this scientific survey,
feel that they have freedom to practice their religion and therefore to maintain their identity in the country. In periods of intolerance, you must allow for some of the respondents not to say what they really feel, because they don't know what their answers will mean to them in terms of physical safety. That's also a fact. Yep. The next question to the Indians, and this is interesting, is what do you think about tolerance as a virtue and a defining factor for being Indian? So, one is you're free to practice. The second is, do you think to be Indian, you have to be tolerant? And there, 84% of the country believe that yes, being tolerant is a defining characteristic of an Indian citizenship. Of them, 85% of the Hindus said that, 78% of Muslims said that, 81% of Sikhs said that, 78% of Christians said that. So a huge majority of Indians believe, of the ones surveyed, believe that to be Indian, you need to be tolerant. Tolerant. Yeah. So the third question I want to lead us to is the third one, which is, what do you think? So question one was Yep. for your identity as, for your religious identity, do you have freedom? They said yes, overwhelmingly. But the second one, to be Indian, do you have to be tolerant? They said yes, we have to be. Then the third question asked of them was to be of your religion, not to be Indian, but to be of your religion, do you have to be tolerant? So, do you have to be tolerant if you're Hindu? Do you have to be tolerant if you're Muslim? So, those who said we are free to practice our religion at 91% dropped to 80% Hindus saying, yes, my religion says have tolerance. 20% Said have no. not agreed. Have That's a not big number. agreed the religion leads to tolerance. 79% of Muslims only have said that we need to be tolerant because our religion says so. That means 21% of Muslims are thinking tolerance is not an essential part of their religion. Christians, 78%. And Sikhs, 75%. Now, Taufeeq ji, if you're still around, ask yourself what the religious groups are saying about tolerance. Now, not only this, Manbir, something else. Now these 30,000 Indians were asked, would you live together with people who are not of your own religion? And an overwhelming majority of people said no. We don't want to live with them. Already we know that many tens of millions of Dalits, of oppressed castes, are already thrown out of the village. Yes. They are not given access to the commons, the village commons. The village drinking water is not accessible to them. And we know the problems of untouchability. We address them as well. Now, when 67% of Indians are saying we do not want inter-religious marriages. Now, it's not simply that. It's 67% of Hindu men saying we don't want our women to marry others. So no longer is marriage a matter between the two parties, the bride and the bridegroom, or the two interested people who want to live together. Society is deciding at a dangerously high level of 67%, saying, no, I don't want people from my religion to marry people from other religions. This tells us what
what that tolerance really means. So when we ask multiple questions, Yep. then we come to these things. And let us remember that these are people who are not drawing the line at marriages. This incestuous marriage system within classes and castes is a characteristic of India. They're also saying, I don't want them as my neighbors. So segregation and this approach have to be understood together. But look, And that's dangerous. Babu, at the same time, if you look at even a place like the US or even Australia, wanting or agreeing for your family member to marry a black person is also, people don't like it. I have had people, some of my friends, who tell me that they will never allow their child to marry a non-white person. We are talking of 2022. Okay. So, I mean, yeah, that also happens. Yep. Go on. Sorry. Yeah. But I think we are looking at India and the numbers of people there Yes. and the existing discrimination that is very toxic, dangerous, and humanity denying. To that, we are adding this understanding. Yep. You see, there was a time when uh, India still largely is a rural society, but as a society, we are urbanizing. That's the nature of the world's movement. The Yep. world's population is moving towards cities. That's a fact. Yes. So, urbanization being what it is, where you can lose, in a nice way, you can lose your identity of an oppressed caste and live in the city. People are saying, I don't want you to live with me because you and I are not the same. So, the co-living that you would expect in the urban conglomerations, which we see in many Western countries, is not happening in India. Uh, Muslims are not given a flat to rent in housing societies in Mumbai. That's a constant complaint. And vice versa. People from and well, it's also a fact that Hindus don't want to go and live in a Muslim housing society. That's also there. And then there are Dalits who are not allowed into your home because you are Dalit. Yep. Because I am not Dalit, I am upper caste, whatever their reasons might be. Yes. So segregation, discrimination go together with intolerance. Now, what is the dangerous tipping point in all this? This is the conclusion I want to offer you, which is really something I was looking at in some despair, saying, why is so much violence being spoken of from the country of my birth, from the place where I grew up? Uh, and what I see is the numbers have not dramatically increased of violence and intolerance, but the inaction of the government and therefore the gaining of impunity by the rowdies and the thugs and the scoundrels who are living on division, who are living on discrimination. This is the significant observation for me, that it's not the numbers that is dramatically increasing, though over 2 or 3 generations, this gets normalized. That's correct. It's in Then fact getting they have a normalized even permanent. now. Yeah. Yes, that is right. I mean, we Tauf- had the Indian Constitution, we had a Charter of Rights, fundamental rights, and we still are doing better than ever in the past before independence. yes. Still, there is a regression that is being allowed by the authorities who are charged with stopping that, because that is criminal today. I mean, I heard somebody say that this was all happening earlier too, but we would say that after having 4 drinks. But now you can say that even without drinking. You know, people would get drunk and The say, impunity.
Yeah. So Taufeeq has a good point, and he's saying, what percent of atheists are tolerant to their children being married into a religious family? And Siraj Jamdar says, were agnostics included in the survey? So I don't know. We've just got a couple more minutes to go. But yeah, do you have any figures about that? I don't know. I don't know if the 30,000 people's composition included agnostics. It's not there in the report that I have read. Okay. So I don't have an answer to that. Yeah. What percentage? Now, I don't believe there are statistics available about do atheists tolerate their children marrying religious people. What I can tell you is anecdotal. Yep. All around me, I am an Yes. atheist, but I don't really carry the atheist identity. I believe I'm a humanist. I don't have to live on my conclusion about God. I've concluded and it's over. It's not God, it's not there. It's the human who is there that matters to me. Yep. So, in the humanist societies, we have many, many humanist families where religious people are the alliances in their family for weddings. And because the religious cannot tolerate a secular wedding, the humanists end up having a religious wedding. They give in. They say it's okay Yeah. because they can't get rid of the religious ritual. Yeah. We will accept it. Yeah, So and that's what that's is fine. happening. And Sonu is saying statistics are like a bikini. What they reveal is suggestive, but what they conceal is vital. Why not look at the majority, that of 79%? Yeah, but also the 21% is important. Uh, It's a large number. Yeah, but you know this is not an original quote about Yeah, bikinis, but of it course. means nothing. It says nothing. Yeah. A quote like that. What is important is if we have 80%, 79% of 1.4 billion thinking like this, we are extrapolating. They only asked Yeah, 30,000. that's right. But that tells you how many are not. If you say, look, 25% of India is actually suffering from malnutrition, you shouldn't say, oh, 25% के बारे में क्यों बोल रहे हैं आप? ये 75% के बारे में बात Yeah, कीजिए. of course. जो मर रहा है वो मर रहा है. That's right. That's right. So I think these big numbers tell us something. If you say 20% of India is intolerant and 20% of India is 20% of 1.4 billion, that's more number of people than the populations of France, Germany, Spain, Portugal, Greece, Italy, the United Kingdom. All of them put together will be less than the numbers we are talking of. Yeah. So these Yeah, are good points. big numbers. Yeah, I agree. Look, we'll have to end it here. I'm sorry, but it's this conversation can go on for hours, I think. And I see your point, and my heart bleeds when I see this religious violence. In fact, just today, somebody has sent me this idiotic violence happening in Punjab. You know, the police people are being attacked there by these religious groups, and it's very embarrassing. And what happened in Melbourne between two groups again based on religion, idiotic. But the thing is to keep talking, not be afraid to talk about it, not be embarrassed about what you believe in, and Sonu I is saying, think let humanity be our religion. I will say just one thing in conclusion, Manbir, Yeah. and that is this. Fanaticism of any kind needs to be fought. That could Right. be religion, that could be caste, that could be the color of your skin, and so on and so forth. But the one fanaticism people are scared of condemning is the one which clothes itself in religion, All right. which then counterattacks the one who is trying to bring reform in society. There can be no reform, and there has been no reform in the history of humanity which was not powered by reason. The ones who bring reason are the ones who have, by the way, also concluded something about the existence of God. But they're working for liberating people from the shackles of blind belief and unexamined belief. That intolerance, that patent right is held by mostly the religious groups. All right. I'm sorry because this meeting is coming to an end. Zoom will cut me off. But thank you very much, Babu. And this is not the end. I'm going to look at
more conversations. Thank you. It's always very interesting to talk to you. Look after yourself. See ya. Bye-bye. दिल तो तेरा बागी है, बेफिक्री का आदी है, तू तो पिघला सोना है, तेरे को क्या होना है, परिंदों का साथी है, किस्मत भी राजी है, तू तो पिघला सोना है, होता है जो होना है. So some interesting comments have come. Siraj Jamdar is saying, let's agree that humanity is the primary religion. Absolutely. Taufeeq is saying, hypothetically, an entity, human or otherwise, claims to be God. What methodology does an atheist have to disprove it? I think the burden to prove it is on the religious people, not for the atheist to disprove it. So yeah, it's not for anybody to prove or disprove what your belief is. You have to prove your belief to me. I mean, yeah, I think that makes sense. Chris Mallika Bhaadra is saying, just curious, why do we need religion? Yeah, point. Renu Singhal says, very interesting discussion, thank you. And Soulful Sonu is saying, thanks, Babu. So yeah, all that is happening. I'm sure, I hope आप लोग सब इस discussion को you take it in the right spirit rather than getting upset, because yeah, it's rational. Nobody was insulted in all that, but thank you for that. And Taufeeq is replying to Chris, where she asked, why do we need religion? To keep at peace with the fact that not all questions can be answered through science. I would add yet there, Taufeeq. It can't be answered yet. But at the same time, religion can't answer so many questions. It doesn't tell us about evolution. It doesn't tell us about the dinosaurs, but that doesn't mean that you can't have a belief. So there's pros and cons on both sides, and I think it's about realizing that. Let's play some music, and इसके बाद में तौफीक को मैं लेके आ रहा हूँ. Okay? आसमां में रहता तू, तक दिन 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 ता, तक दिन ता किटा तक दिन 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 ता, तक दिन 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 ता, तक दिन ता किटा तक दिन 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 ता, किटा तक दिन ता, तक दिन ता किटा तक दिन दिन ता, किटा तक दिन ता, तक दिन ता किटा तक दिन 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 तक ता, किटा तक दिन ता, तक दिन ता किटा तक दिन तक दिन तक दिन. बात सीधी सादी है, चिंगारी जो बाकी है, होने दो जो होना है, तुझको भी क्या खोना है, तारे तेरे कदमों में रहते हैं, तू तो पिघला सोना है, होता है जो होना है, आसमां में रहता तू, तक दिन दिन ता, दिन ता किटा तक दिन दिन ता, ता किटा दिन ता, दिन ता किटा दिन ता, दिन ता, तक दिन दिन ता, दिन तक दिन ता किटा तक दिन दिन ता, किटा तक दिन दिन ता, दिन 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 ता, दिन ता, तक दिन ता, दिन तक दिन ता किटा तक दिन दिन ता, दिन किटा तक दिन ता, तक दिन ता किटा तक दिन ता, तक दिन ता किटा तक दिन ता, तुम ता, तक दिन ता किटा तक दिन ता, तुम. दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं कहते सुनते. मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली, और ये कार्यक्रम आता है हर थर्सडे नाइट को 8 से लेकर 10 बजे रात में. अपने दोस्तों को बताइए इस कार्यक्रम के बारे में. बताइए कि हम लोग कोशिश करते हैं कोई अच्छी अच्छी बातें करने की. एंड जो डिस्कशन हो रही थी अबाउट एथियज्म एंड टॉलरेंस एंड इनटॉलरेंस, एंड सिराज कह रहे हैं कि एन एक्स कॉलीग इन न्यूजीलैंड इज अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड एथिस्ट, बट ही इज एक्चुअली एन ordained priest of a church in US. Oh well, that doesn't mean anything. But anyway, अच्छी बातें करें. अब मेरे साथ
तौफीक आए हैं बड़े दिनों बाद। तौफीक, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मनवीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आज दोबारा बुलाने का। और कहते सुनते कि मेरे दोस्तों को, साथियों को, मेरी फैमिली को मेरा इस्तकबाल। फैंटास्टिक। एंड आप सिडनी शहर में तहलका मचा रहे हो। अविजीत सरकार स्टोरीज, 5 प्लेज, ओरिजिनल म्यूजिक, ओरिजिनल राइटिंग, एंड ऑफ कोर्स 5 डायरेक्टर्स। बताओ यार, ये सब इट मस्ट बी अ बिग जॉब एंड यू आर डूइंग, यू आर क्यूरेटिंग दैट, करेक्ट? जी जी जी। आई मीन इंटरेस्टिंगली लाफ, क्योंकि अभी बाबू भाई से जो आपकी कॉन्वर्जेशन हो रही थी, जी। उसमें the stories that are a part of this discourse of 5 stories are actually challenging exactly what Babu Dada stands for. ओह वाह। And yes, and for the larger Australian crowd, if I may put it this way, that this story has been written with very contemporary issues of a family. What makes it unique is that the same contemporary issues that are common for most families today, or most people who are living our daily lives and doing the grind, हाँ। this is written through a South Asian lens, ओके। right? And which makes it unique because the people who are upholding these stories and developing it further, not all of them come from South Asian background, and some of them are hardly aware of what a South Asian background would look like, or a हाँ। lens of a South Asian story would look like. ओके। Despite of that, yesterday was the first time I actually saw all the 5 plays in action, because we had a first joint rehearsals of all the 5 play, हाँ। and I couldn't be more proud, and I use that word very very carefully, that to see what I saw on stage with the incredible understanding of humanity beyond everything, that हाँ। that we all connect with. And in my previous addresses, I have mentioned this quite a few times, and today seems to be just the right time to be talking about it, that uh, the idea of crossover stories was basically to cross on the other side, only to realize how similar we are, not to see how different we are and explore that. इन uh, कल्चर्स यू मीन? it is in cultures, in humans. I mean, like, या। being on the other side of this particular screen for the longest time, I was thinking, oh, I do not know what that world is beyond that screen, and I want to be a part of it. And as a child, I wanted to explore that. And I realized that no, it's not a very different world. And every time you go and you cross over something, the unknown, um, we realize that it makes us so much very similar to people, and that enough is enough for us to create the appreciation of stories which are not written necessarily through our perspective. And Avijit Sarkar has publicly quite a few times said this in public, that he is an atheist. So from a South Asian point of view and from an atheistic point of view, we are not holding back, but commenting on religion. We are commenting on sexuality. We are commenting on terrorism. We are commenting on communalism. So हमने कुछ नहीं छोड़ा है. गुड। और उस प्लेटफॉर्म पे कुछ बहुत डायबॉलिकल स्टोरीज बोली जाएंगी. तो बहुत सी बार हम आते हैं प्रोजेक्ट्स पर और प्लेटफॉर्म्स पर ये बोलने के लिए कि प्लीज आइए, प्लीज आइए. पर मैंने आपके प्लेटफॉर्म के जरिए एक चीज तो ये जरूर रिक्वेस्ट करनी है हर एक से, कि अगर आपके अंदर दूसरे के पर्सपेक्टिव को देखकर अप्रिशिएट करने के बाद घर जाने के बाद सोचने की क्षमता नहीं है, तो फिर प्लीज ये चीज ना देखिए, फिर बिकॉज मत आइए। दे विल आइदर मेक यू वेरी अग्रेसिव, और दे विल पुट यू इन एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, वन वे और द अदर. सोचने और समझने और एक्सेप्ट करने की क्षमता हो, तो ये डेफिनेटली इज द शो दैट यू नीड टू बी कमिंग एंड ज्वाइनिंग एंड मेकिंग वाओ। अ सक्सेस. वाओ, यू हैव मी इंट्रिग्ड देयर। तो अगर ये डिस्टर्ब होने की आप में क्षमता है तो जाइए। अगर आप सोच रहे हैं कि ये बड़े घरेलू से फील गुड, यू नो, बॉय मीट्स गर्ल एंड दे गेट लिव हैप्पीली एवर आफ्टर वाले हैं, तो वो नहीं है। ये आपके अंदर कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब करेंगे। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग, तौफीक?
Yes, they will if I may not use the word of disturb, जैसे हम थिएटर में अक्सर कहते हैं कि theater is supposed to comfort the discomfortable and discomfort the comfortable. Yeah. और यहाँ पे हमने minorities को comfort करने का जिम्मा उठाया है. Wow. अब वो minorities आप अपने आप को religion demographic से समझ सकते हैं, या आप cultural demographic से समझ सकते हैं, या for example just an atheist point of view of how an atheist thinks is treated by the world around him, and it is a very fair and a valid point. और मैं मुझे as a religious person या spiritual person आजकल जो नया चला हुआ है उसमें how do I feel about it is irrelevant. मुझे बस इतना ध्यान रखना है कि मैंने ये एक प्लेटफॉर्म इसलिए क्रिएट किया है ताकि लोग आके अपनी कहानियां अनअपोलोजेटिकली बोल सके, और उनको वायबल कैसे करना है वो क्रॉसओवर स्टोरीज की जिम्मेदारी है. वाओ. तो इसमें म्यूजिक भी ओरिजिनल है, अभिजीत बिल्कुल. सरकार ने खुद से कंपोज किया है, बिल्कुल. एंड वो स्पेसिफिक है हर कहानी के लिए, हर कहानी को अपने अंदर जोड़ रहा है. वैसे वाला म्यूजिक है, मैंने बिल्कुल. सुना है. आई हैव हर्ड सम स्निपेट्स, बिल्कुल. बहुत खूबसूरत है. बिल्कुल. आपने जो स्निपेट सुना है वो अपने आप में एक, यानी इट्स बिकम द साउंड ऑफ द शो इन अ वे. पर आप इसको एक लेयर इसमें मैं और ऐड कर दूं इन टर्म्स ऑफ इंट्रीग, के अगर आप ऐसी कोई म्यूजिक सुन भी रहे हैं जिससे आप फेमिलियर हैं ड्यूरिंग द शो, it is for the learned ear you will realize that it is actually a rendition of the original as well. तो जो classics भी हमने यूज किए हैं उनको भी classic में ही रखा है. अभिजीत sir has given his own flair and his own style to it. वाओ. राइट. सो बता दो लॉजिस्टिक्स कहाँ पे है, क्यों है, कितने बजे है? क्यों है? क्योंकि ये कहानियां, मैं क्यों से शुरू करता हूँ कि मेरे लिए क्यों हमेशा हमेशा जो है बहुत जरूरी होता है कि मैं ये कर क्यों रहा हूँ. ये बीड़ा मैंने 40 लोगों को 50 लोगों को इकट्ठा करके ये कहानियां कहने का क्यों उठाया. क्योंकि ये कहानियां कहना जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन उनको नहीं कहना वो उससे बड़ा रिस्क है. क्योंकि अगर एक भी ऐसी आवाज है जो आपकी सोच से, आपकी समझ से अलाइन नहीं करती है, quantity doesn't matter, the voice matters. If there is a voice, it needs to be addressed. और उसके बाद उस voice का क्या कर सकते हैं हम, वो तो फिर बुद्धिजीवी लोग बताएं कि क्या कर सकते हैं. क्योंकि अब रिलीजियस लोग तो apparently बहुत ज्यादा provoke हो जाते हैं. तो this is again, I mean, I cannot speak for the whole community, but as a practicing Muslim and someone who is who identifies himself as an Indian and culturally Indian and traditionally Indian, जो भी मैं कहानियां बोल रहा हूँ वो इन दोनों मेरी आइडेंटिटी से कॉन्फ्लिक्ट करती हैं. फैंटास्टिक. तो ये क्यों है? and you have nicely woven जो हमारी बात हो रही थी, and of course वो कहानियों का they're going to touch all of us in some form or the other. जी. So कहाँ पे 17 तारीख को नेक्स्ट? जी, 17 तारीख को इनवाइटेड हैं आप सब. अगर मेरे पास मेरे ख्याल से कुछ गिनती की 7 सीटें बची हैं 17 तारीख के लिए. और पर अगर आप आना चाहते हैं तो प्लीज मुझे बताइए, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा अकोमोडेट करने की. फ्राइडे 18th का जो शो है दोपहर वाला, वो सोल्ड आउट ऑलरेडी हो चुका है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उस पे वेटिंग्स हैं अभी. सो वी आर वेटिंग कि अगर कुछ कैंसलेशंस या कुछ लोगों के पास हो जाए. 18 की शाम में जो है मेरे पास एज ऑफ लास्ट नाइट कुछ 13 या 14 टिकट्स बची हैं. तो आज मेरा मौका, आज ये मौका आज इसलिए नहीं था लोगों को बोलूं कि आइए और टिकट खरीदिए, लेकिन मेरा ये आज जो इंटेंट था वो ये था कि आप लोगों को शुक्रिया करूं कि आप लोगों ने जो है 3 साल की जो मेरे पागलपन को साथ दिया है, और जब मोमेंट ऑफ ट्रूथ आया उस चीज पे भी आप लोग बकल नहीं करें. एंड उस वक्त भी आप लोगों ने, डिस्पाइट ऑफ नोइंग कि हम क्या करने जा रहे हैं, आप लोगों ने सपोर्ट करने की कोशिश करी. तो यस, ट्रूली दैट्स व्हाट फैमिली इज. And every listener of Kehte Sunte has proven that they deserve to be called a family, and I feel humbled to be a part of this family. Absolutely. And Chris is saying, are we getting passes in Melbourne, Taufeeq? And Mubina कह रही है, eagerly awaiting. All the best, Taufeeq.
एंड ममता जी भी कह रही हैं ऑल द बेस्ट तौफीक. सो यू गॉट सम गुडविल हैपनिंग देयर. या और टू आंसर क्रिस, बहुत महंगा है थिएटर लेकर आना, टू बी ऑनेस्ट. तो इन शॉर्ट, पर हाँ, मेरी आप तीसरी ऐसी शख्स हैं पिछले 3 दिन में, दो दिन में एक्चुअली, कल से ये बात चल रही है जब से हमने तो एक ग्रुप्स में डाला है कि मेलबर्न लेकर आइए. It's happened so many times that this request has come in that I might actually hold you guys very soon and bring you guys up to speed and work out something that we can do in Melbourne. Crossover Stories, by the name of it, is always willing to cross over the state boundaries as much as it is wanting to cross तो the mental boundaries. स्टेज हैंड्स की जरूरत होगी तो मैं भी साथ में चल पड़ूंगा तौफीक. ठीक है. स्टेज पे हैंड्स, लेग्स, कैरेक्टर की जरूरत पड़ेगी तो आप साथ में नहीं, मेरे साथ कैरेक्टर्स तो चलेंगे. नहीं, बट स्टेज हैंड अगर कोई उठा पटक करनी है, कुर्सियां उठानी लगानी, वो सब मैं कर दूँ. चलिए, थैंक यू तौफीक. एंड ये कहाँ पे हो रहा है वो भी बता दीजिए वेन्यू. बैंक्सटाउन आर्ट सेंटर में हो रहा है एंड इट्स एट 5 ओलंपिक ड्राइव. और बहुत ही खूबसूरत वेन्यू है. पंकज का बनाया हुआ एक बहुत प्यारा वीडियो है यस, जिसमें आई उसने सॉ कवर किया है वो इवेंट पूरे वेन्यू के अंदर. तो यूफिनी फिल्म्स पे जाके आप उसको देख सकते हैं. एंड क्रिस मल्लिका भाद्रा ने एक्चुअली सारे डायरेक्टर्स से बात करी है. तो अगर डायरेक्टर्स के बारे में और उनकी कहानियों के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो वो है. और Manbir bhai, you have constantly had Avijit Sarkar as well as me on this platform to speak about the stories and the motivations behind it. तो आप लोगों को अभी भी अगर आप लोग टिकट ले चुके हैं और आप लोग आने वाले हैं तो it is going to be good videos to watch and prepare yourself of what you're in for. और अगर आप लोगों ने नहीं लिए टिकट्स और आप देखना चाह रहे हैं अभी भी क्या है तो those videos are all there. So thanks to all of you that you've given us that platform and the opportunity to speak and talk about the show. Excellent, Tawfiq. It's never easy to pull off drama. It's a lot of hard work and it's also a lot of hard work to motivate people. You know, अभी पठान तो जाके देख लेंगे क्योंकि it's glitzy, it's glamorous, it's being talked about. But सोचने वाली चीजें हम लोग कमी, you know, it's very hard to do that. But yet you managed to make a good impact. So thank you very much for that. All the best. And thank you, Manbir bhai. yeah, so I'll keep informing people about crossover stories की जो plays हो रहे हैं, Avijit Sarkar stories. I'll keep pushing that through and I hope all of us can meet there. मिलेंगे हम सबको. 100%. एंड उसके बाद वाले एपिसोड पे मेरे लिए आपसे बहुत जो है आग्रह है मेरा आपसे कि आपका अनबायस्ड और क्रिटिकल ओपिनियन अगर है तो ठीक है, लेकिन unbiased and as honest as you've always been on your platform and the mic that you hold, आप सिडनी को बताएं कि दोबारा ये क्रॉसओवर स्टोरीज के शोज जाने लायक हैं. मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है क्योंकि आई एम अ फैन ऑफ योर्स, आई एम अ फैन ऑफ अभिजीत. सो कहीं ना कहीं मैं बायस हो जाऊंगा, लेकिन क्या करूं, इंसान हूं. That also counts for the fact that आपकी दोस्ती का जो सीमेंट है वो आपका कंस्ट्रक्टिव क्रिटिक है और जिस वजह से चाहे वो अभिजीत सर हो या हम हो अपने ट्रैक पे लगे रहते हैं. तो हमें पता होता है ना कि अगर हमने कुछ गड़बड़ करी है तो माइक पे खोल देंगे सर हमारा. हाँ, वो तो बोल ही दूंगा. ठीक है. But thank you pleasure to talk to you, Taufeeq. All the best. Sure. And keep pushing along, trying to change the way we consume art. Thank you very much. Okay. Thank you, Manbir. Thank you to all Taufeeq Ahmed Sheikh. He's the karta dharta of the big string puller behind the crossover stories by Avijit Sarkar, happening at Bankstown on the 17th and 18th. If you haven't bought tickets as yet, do go and we'll see you there. मैं भी जा रहा हूँ 17 तारीख को, तो आपसे मुलाकात भी होगी उस दिन. चलिए तौफीक, be good, bye bye. So ये Taufeeq Ahmed Sheikh and let's play some music and then let's see if we can get Neeraj Nanda ji.
नी मैं कमलिया मेरा राजा माही मक्का नी मैं कमलिया रे नी मैं कमलिया नी मैं कमलिया मेरा राजा माही मक्का मेरा राजा माही माही मक्का नी मैं कमलिया रे नी मैं कमलिया। सो दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं कहते सुनते, और मैं हूं मनबीर सिंह कोहली, और ये कार्यक्रम 10 बजे तक चलेगा। सिडनी टाइम 9:31 हुए। मैं ट्राई कर रहा हूं नीरज नंदा जी से कांटेक्ट करना। इंडिया में थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन आज मेरे पास बहुत खूबसूरत भेंट है, और वो है हमारे दोस्त पंकज उपाध्याय की एक कविता, और उनकी खूबसूरत मलमली सी आवाज़ में आपको सुनने का मौका मिलता है। तो ये मैं I'm going to put that on. Let's go. Welcome to Poetry Podcast. My name is Pankaj Upadhyay. I'm a Sydney-based independent filmmaker, visual artist, and I also dabble in poetry. जैसा कहते हैं, विद्या ददाति विनयम, knowledge leads to humility. कुछ ही दिन पहले माँ सरस्वती की पूजा थी, so सारे दर्शकों को, श्रोताओं को बहुत सारी शुभकामनाएं। सरस्वती पूजा का काफ़ी महत्व है, स्पेशली ईस्टर्न बेल्ट में, हमारे कंट्री के, इंडिया के, होम कंट्री। और मेरी बहुत सी अच्छी यादें हैं जब मैं बड़ा हो रहा था। तो सरस्वती पूजा के दिन हम पंडाल हॉपिंग तो करते थे, विच इज़ अ कस्टमरी रिचुअल इन कैलकाटा। मगर इसके अलावा बिकॉज मेरे फैमिली में कॉमर्स और बिजनेस का एनवायरनमेंट था, तो हम हमारी अकाउंटिंग किताबों पर, लाल किताबों पर ओम लिखते थे, और घर में एक छोटी सी पूजा करते थे, और माँ सरस्वती की वंदना करते हुए ये प्रार्थना करते थे कि सब और सुख, शांति, वैभव, ज्ञान और विद्या का प्रसार हो। इसी सोच के साथ मैं आज की कविता डेडिकेट करता हूँ माँ सरस्वती को, जीवन को और जिंदगी को। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स डाइव इनटू द पोएट्री। जिंदगी। कल एक झलक जिंदगी को देखा, वो राहों पे मेरी गुनगुना रही थी। फिर ढूंढा उसे इधर उधर, वो आंख में चौली कर मुस्कुरा रही थी। एक अरसे के बाद आया मुझे करार, वो सहला के मुझे सुला रही थी। तुम दोनों क्यों खफा हो एक दूसरे से, मैं उसे और वो मुझे समझा रही थी। मैंने पूछ लिया, क्यों दर्द दिया कम वक्त तुमने इतना। वो हंसी और बोली, मैं जिंदगी हूं पगले, तुम्हें जीना सिखा रही थी। जो छूट गया उसका क्या मलाल करें, जो हासिल है चल उससे ही ये सवाल करें। बहुत दूर तक जाते हैं यादों के काफिले, फिर क्यों पुरानी यादों में ये सुबह और शाम करें। माना एक कमी सी है, जिंदगी थमी सी है, पर क्यों दिल की धड़कनों को दरकिनार करें। मिल ही जाएगा जीने का कोई ना कोई बहाना, आ जरा इत्मीनान से किसी खास का इंतजार करें। तुम दूर ही सही, तुमसे मिलता हूं मैं हर रोज। तुम्हारे शहर में सूरज चांद सा चमकता हूं मैं हर रोज। बड़े शिद्दत से जीने लगा हूं मैं तुझ में रात दिन, तुम्हें पता ही नहीं, तुम्हारी सांसों में महकने लगा हूं मैं हर रोज। तुम दूर ही सही, तुमसे मिलता हूं मैं हर रोज। तुम बेबाक हंसकर गुजर जाते हो दिल से मेरे, बहुत देर तक खोजता है ये दिल तुमको दिल से मेरे। तुम्हें पाने की खुशी में यादों में दूर निकल जाता हूं, खमबख्त दिल ही तो है, तुम्हारी गली से गुजर जाता हूं। तुम्हारी जिंदगी गीतों से बनकर उतर गई है यहां, तुम्हारे दर्द को सरेआम पिरोकर गीत गाता हूं मैं हर रोज। तुम दूर ही सही, तुमसे मिलता हूं मैं हर रोज। हर शख्स से मुस्कुराकर मिला ना करो यहां, आदमी हो आदमी से रहा करो यहां। तुम्हारी चंचल सी हंसी से परेशान है ये शहर,
तुम सूरज सा उगती हो, चांद सा ढलता हूँ मैं हर रोज़। तुम्हारी सलामती की दुआ करता हूँ मैं हर रोज़। तुम दूर ही सही, तुमसे मिलता हूँ मैं हर रोज़। उम्मीद करता हूँ आपको ये पोइट्री पसंद आई। इस तरह की पोइट्री को सुनने के लिए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को पोइट्री पॉडकास्ट, #पोइट्री पॉडकास्ट या #पंकज उपाध्याय, #यूफनी फिल्म्स या #रेडियो कहते सुनते 89.3 FM सिडनी। दिस इज पंकज साइनिंग आउट फॉर पोइट्री पॉडकास्ट। फिर मिलेंगे। थैंक यू। वेलकम टू पोइट्री पॉडकास्ट। माय नेम इज पंकज। बताइए कितनी खूबसूरत बात कह दी अबाउट लाइफ। थैंक यू पंकज, दैट इज़ रियली, एंड आपका जो डिलीवरी स्टाइल है दैट इज़ फैंटास्टिक। नमिता मतानी जी इज़ वॉचिंग द शो और नमिता जी इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्लेज जो हो रहे हैं। सो नमिता, ऑल द बेस्ट फॉर द प्लेज। आई होप यू गेट अ रिसाउंडिंग applause there. Thank you for joining us. And हाँ, तो हम लोग फिल्मों की बात कर रहे थे और मैंने फिल्मों का आपसे सवाल किया कि इस हफ्ते की आपकी रिकमेंडेशंस क्या हैं। सो आई गॉट अ फ्यू रिकमेंडेशंस यहाँ पे। एंड अतीव ढंग कह रहे हैं वध ऑन नेटफ्लिक्स। हाँ, मैंने सुना है, बहुत अच्छी फिल्म है। मुबीना कह रही है डॉक्टर जी, एंड डॉक्टर जी इज़ फैंटास्टिक, बट आई लव्ड इट, इट इज़ अ ग्रेट मूवी। सुमित कोहली कह रहे हैं किस्मत। ओके, किस्मत ये नेटफ्लिक्स पे है क्या? एंड अभा गार्गिया जी अभी देख के आ रही हैं वहीं से, व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट। ये फिल्म शेखर कपूर की डायरेक्टेड है। अगर आपने अब तक नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। पिछले हफ्ते हम लोगों ने पासेस दिए थे, 5 डबल पासेस, एंड उसमें अभा जी जीती थी। सो थैंक यू अभा जी फॉर पार्टिसिपेटिंग, एंड आई एम ग्लैड कि आपको टाइम पे मिल गई। मंजू मित्तल जी भी जाके आ चुकी हैं, एंड मुबीना जी का इंतज़ार है और जाहिद जमील का। लेट्स सी उनको कैसे लगती है। और रेनू कह रही है एन एक्शन हीरो। रेनू, मैं फ़ैन हूँ एक्शन हीरो का। क्रिस भी कह रही है वध। एंड सुखदेव सिंह जसवाल हमारे दोस्त हैं, एंड ही इज़ अ मीडिया पर्सनालिटी ऑल्सो। संडेज़ को रेडियो महक करते हैं 88.5 पर 2 से 4 बजे तक। पठान, बैबिलॉन एंड व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट। ओके, सो आपने भी देख ली व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट, दैट्स ग्रेट। लेकिन जो मुझे बात करनी थी ना, वो फिल्म कोई फिल्म नहीं है लेकिन एक डॉक्यूमेंट्री है, और वो डॉक्यूमेंट्री आप ज़रूर देखिएगा नेटफ्लिक्स पे। एंड इट्स कॉल्ड फैंटास्टिक फंगाई व्हाटएवर, वो फंगस के बारे में बहुत इंफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्री है। और माइसीलियम, जो ये सारा फंगस का नेटवर्क है हमारे पैरों के तले, जो हमारी धरती है उसके अंदर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स, एंडलेस। एंड उसमें बताया गया है कि हाउ वो कार्बन को स्टोर करते हैं, ये ऑल दीज जो माइसीलियम जो अंडरग्राउंड होता है, हम लोगों को तो सिर्फ उसके मशरूम दिखते हैं। एंड ऑल्सो द मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ऑफ मशरूम्स, एंड इट इज़ कनेक्टेड टू आवर एवोल्यूशन। कई साल पहले की बात है, मैं किसी से सुन रहा था, कोई यंग लोग थे और वो कह रहे थे मशरूम्स रूल अस, यू नो। एंड आई थॉट ये क्या दिमाग खराब है ये। लेकिन आप ये डॉक्यूमेंट्री देखें, आई मीन इट्स नॉट अबाउट रूलिंग अस, बट वो कितनी ज़रूरी है फंगस। और जैसे पेनिसिलिन है, बेसिकली दैट्स अ फंगस, एंड इट हैज़ सेव्ड मिलियंस ऑफ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। और हम लोग फंगस मशरूम्स को खाते भी हैं और उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। इनफैक्ट मोदी जी, इंडियन प्राइम मिनिस्टर, भी कोई ख़ास मशरूम्स खाते हैं 15,000 रुपये किलो के, एंड ऐसा कहा जाता है। एंड ऑब्वियसली उनके लिए बड़ा अच्छा साबित हो रहा है, कहीं ना कहीं काम में आ रहा होगा उनकी जो वो है। तो यह ज़रूर देखिएगा। एंड पंकज यादव कह रहे हैं यार क्रिकेट देख रहा हूँ। अरे छोड़ो यार क्रिकेट, ये इतनी ज़रूरी बात हो रही है। एंड हमारी दोस्त हैं राजू अकोलकर, वो आयरलैंड में बैठी हैं। वो कह रही हैं हेलो फ्रॉम आयरलैंड, जस्ट ट्यून्ड इन एंड कॉट द लास्ट बिट ऑफ दैट वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। और वो बात कर रही हैं अबाउट द टॉलरेंस एंड इंटॉलरेंस। एंड वो कह रही हैं कि व्हाट इज शॉकिंग इज दैट वी आर किलिंग ईच अदर फॉर समथिंग वी कांट prove or disprove. And she's asking, can Taufeeq's shows be watched on any social media platform? Sorry, Raju, not at the moment. Not at the moment.
लेकिन आई हैव टोल्ड हिम, मैंने वहाँ से लाइव करना यार, देखेंगे. एंड पंकज एंड जाहिद जमील कह रहे हैं गॉट द टिकट्स. सो उन्होंने भी एक डबल पास जीता था व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट का. एंड नमिता मतानी जी कह रही है कि लवली टू हियर योर रिसाइटल पंकज, एंड शी इज़ ऑल्सो थैंकिंग मी फॉर the good wishes. But I will wish anybody who is doing anything to bring art to society, acha art, not chichor art. And so thank you Namita ji for spending your time. I know ये सब labor of love है, इसमें कोई पैसे नहीं बन रहे लोगों के, सिर्फ एक प्यार है जो आर्ट के साथ में है. चलिए, मैं आज नीरज जी से कांटेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन मैं एक और इंडिया में हमारी संवाददाता बैठी हैं क्रिस मल्लिका भद्रा, उनको लेके आता हूँ थोड़ी सी देर में. ये गाना चलाता हूँ एंड देन आई लुक फॉर हर. हेरिदेऊ न एकैछिन यता बन्नलाई कति धेरै नि छ मनमा, अरूलाई त छ होला अनुभव, तर मेरो यो हो पहिलो पटक जब देखे तिमीलाई मन आतियो, तिम्रो चित्र आँखामा बसियो, अनि सुने तिम्रो स्वर कति सुरिलो, उडी गए म अर्कै ब्रह्माण्डमा. म जहाँ जान्छु जहाँ हुन्छु त्यही मेरो सामुनै हुन्छौ तिमी, नजिक नहुँदा पनि किन तिमीलाई सधैँ देख्छु. यस्तै हो हाम्रो सम्बन्ध, बस्दैछु म तिम्रो जाँदैमा. यस्तै हो हाम्रो सम्बन्ध, बसिसकेर तिम्रो जाँदैमा. बिर्सन सक्दिन अब म. सो दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं कहते सुनते, और मेरे साथ भारत वर्ष से, दिल्ली शहर से जुड़ी हैं अभी एकदम करंटली फर्स्ट हैंड क्रिस मल्लिका बैड्रा. क्रिस, कैसी हैं आप दिल्ली में? इवनिंग मनबीर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे? गुड. आप पोल्यूशन खा रही हैं वहाँ पे, धुआं? पोल्यूशन खा भी रही हूँ, सूंघ भी रही हूँ, सब कुछ हो रहा है. And that is the great love that we have for that country. It's mad, but we still love it. और बताइए क्या हो रहा है? What have you been up to? कहाँ घूमी, क्या किया? More about in Delhi only, मनबीर. दिल्ली से बाहर तो निकलना नहीं हो पाया. Spending some time with friends and family. थोड़े बहुत podcast भी record किए, podcast release भी कर रही हूँ. So it's just things that are keeping me busy. Been doing a bit of reading. So yeah. All Okay. things. Great. And बताओ, you had a very interesting thing to ask कि can, okay, अपने आप से बोल दीजिए. और ये आपकी अपनी स्टोरी लग रही मुझे. Exactly. I had to ask because I get this asked frequently that I'm the only child, for people who don't know. So I'm the only child of my parents. People often ask me that, oh, how can you just move to a different country? You've left behind your parents. Why don't you just move back? So मैंने कार बना के ये question पे पूछा कि as the only child, are we as being selfish if we are choosing to migrate, or even if our family is supporting us, if they are, they're supportive of the decision that we want to migrate. So is that a selfish move? Is that considered to be very selfish? I want to qualify that. Why only a single child, अभी जैसे मैं हूँ, I am one of 3. But when I moved here, I still felt guilty कि मैं अपने पेरेंट्स को छोड़ के आ गया हूँ वहाँ पे, और माय ब्रदर इज देयर, और उनके ऊपर सारा प्रेशर. आई फेल्ट लॉट्स ऑफ गिल्ट. सो वो गिल्ट जो है, आई डोंट थिंक इट्स रिस्ट्रिक्टेड टू जस्ट बीइंग the only child. But tell me, did you feel guilty
जब भी आप यहाँ पे मूव की तो डिड यू फील गिल्टी? To be honest, Manbir, I never felt that guilt because maybe for one, my family was and is hugely supportive of the fact. Like there was a time I remember when my mom and Masi, they were like, तुम यहाँ आओगी तो हम ज्यादा गुस्से में होंगे if you choose to come back. भगा Stay दिया? there. हाँ, Build your भगा yes, दिया? मतलब so build your life. You're very happy. You do whatever you want. So I've never felt that guilt. Obviously now all of us are aging. Our parents are aging. थोड़ा बहुत वो लगता है कि हाँ they're aging. I should be there. But this societal guilt, which I think is an added burden. हाँ. अगर आपको नहीं भी लग रहा हो तो वो ठूस देंगे आप. They'll shove it on your face कि you should feel guilty about it. How come enjoying outside while you और मुझे लगता है ये थोड़ा बहुत ना वो मे भी शायद jealousy भी आ रहा होगा कि हम नहीं जा पा रहे आप हो तो let's just Okay. I don't know, I'm just speculating, maybe maybe not. And I don't have you that. know, yeah, sometimes that guilt will come from family, sometimes from your own self. And Right. ये कि भाई parents are aging. I remember जब when I came here, उसके 1-1.5 साल बाद my father became sick, and we knew he's going to die, and I was torn here. I was absolutely torn, and I thought I'll go back. मैंने नौकरी भी तलाश कर ली वहाँ पे. मैं गया था when I went to see him. I went back to my old company, and they said, yeah, sure. And my mother said, nah, don't come back. Okay? And she said कि भाई चाहे मुझे 2-3 साल ही हुए थे आए. And she said, no, तुम वहाँ पे set हो रहे हो. And that was wise. नहीं तो मैं तो चला गया था अपने जज्बातों में बह के, guilt में. I would have gone. And I'm not saying bad things would have happened if I was in India. लेकिन like यहाँ पे my child was in school. You know, we had seen the good lifestyle that we could give to our children, and rightly or wrongly जो भी है. But my mother helped me make the decision. नहीं तो I was finding it very, very hard. And I think society loves to target like us being the only children because फिर उनके पास ये clause आता है कि आपके पास कोई और sibling तो है नहीं. So who's going to take care of your parents? Are you in an old age home? क्या why are you choosing to go back? आ जाओ ना वापस. Like अभी कुछ दिनों पहले we had this puja at our place, and the pandit who came to do the puja, he was telling me, अब ना तुम गुड़गांव आ जाओ. And I was, first of all, in all respect, it's not your business to comment. And second, why would you say something like that? My parents both them, my Masi is telling me that's a different issue altogether. But somebody who's not even related to me or my family making a part at that and things that he can get away with it is just something that irks me, to be honest. Namita is saying, I think the world has become a much smaller place. So moving countries should not feel like deserting family. Look, yes and no, Namita. लेकिन you know when things happen, उस टाइम पे पहुंच नहीं सकते कई बार, and तो उस टाइम पे you feel guilty. Like I couldn't reach there when my father passed away. I missed him by a few hours. I could not be there when my mother's cremation happened. So it bites you inside कि भाई ये क्यों कर रहे हैं हम लोग? And that question is always there. लेकिन I would also like to answer to Namita Manbir, if that's okay. Yeah. That there are two sides of guilt. One is your individual guilt that you kind of face or you experience. The second is guilt that is enforced upon you. Maybe you are at an equation, you are in tandem with your sin, but when the society adds that guilt or enforce, that becomes a problem. That is what I was trying to kind of raise here on this platform. And I'll add another angle to it. So say if there is a you got a sibling, you're a male sibling, and then you have a female sibling. तो आपकी बहन है, उसकी शादी होगी, वो चली गई. Now somehow as the son, you carry that guilt कि ये बेटे ने छोड़ दिया जी इनको. बेटी के बारे में कोई नहीं बोलता क्योंकि बेटी की शादी हो गई है तो वो nobody is expecting the daughter to look after the parents. But and look, let's face it, it is very hard for aged people to survive in India. I mean, of course, अगर आपके पास में पैसे ठीक है, अगर आपका सोशल नेटवर्क अच्छा है तो कर सकते हैं.
लेकिन अगर ना हो तो it is quite difficult. Manbir, I agree. It is difficult, and the kids choose to move out. Everything's said and done. But what I'm saying is, if it's a son who's trying to kind of figure it out in his head, कि मैं कैसे करूँ, right? I am married, my family have to look after my parents. उसके ऊपर उसका work stress है, nowadays everybody has horrible work-life balance, especially in India जो मैं देख रही हूँ. उसके ऊपर अगर मैं continuously उसको poke करती रहूँ, अरे यार तुम ना चले आओ, you're being selfish. Does it help the person in that situation? And what makes me angry is कि ये जो लोग बोलते हैं ना आ जाओ वापस, यार आपका दिमाग नहीं है क्या? आ जाओ, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे इट इज जस्ट एक रूम से दूसरे रूम. देयर इज, आप छोड़ के आ जाओ ना, लेट्स सी, आप छोड़ो और आ जाओ इधर. नहीं, फिर तो मनबीर दूसरा एंगल शुरू हो जाता है ना. देन दे रीच दैट एंगल ऑफ पेट्रियोटिज्म कि हम तो कभी नहीं जाएंगे, वी लव आवर कंट्री, तुम and लोग that's okay. नहीं. So इट्स अ डिफरेंट एंगल ऑल टुगेदर. हाँ तो ठीक है, तो ना जाओ, बट मैं चले गया, you know. And Namita Carey, agree with you. I felt the same when I lost my mom during COVID times and I couldn't go to India, but I know I did everything I could from here for my parents. But yes, it is always very hard क्योंकि आज तक I do feel कि भाई look, I couldn't be there. I couldn't be there. I missed my mother's cremation by a day. I missed my father's dying by 2 hours. 2 hours यहाँ से. So that is all. But it is very hard to move countries. एक जब भी हम छोड़ के भी आते हैं, it is very hard. यहाँ पे आते हो, यहाँ पे there are challenges, Exactly. adjustment के, भाई culturally, फिर कई बार नौकरी नहीं मिलती लोगों को. We have done all that, and now you're saying वापस आ जाओ. How selfish Even on are that part, Manbir, अभी जैसे I'm here for a month, right? you? Coming back here is also not easy. ऐसा नहीं कि आपने बोरिया बिस्तरा पैक किया and you're back to your parents' house. Things have changed drastically. You have to kind of adjust your mindset to come back to this place, which is cramming with people. Yes. इतना pollution, honestly, my BP has spiked up because of the pollution. Driving is a menace. I'm not bitching about the situation, but this is what the situation is. So it's not easy कि कल को मैंने decide किया, I pack my bags, sell everything and come. What about the mindset? We have taken a certain number of years to adjust to a place which was completely foreign to us. It will take the same amount of time for unlearn everything that you've learned. Yes. और फिर यहाँ आके settle करना. It's just too much on the individual and the immediate family also, I think. And people who say that flippantly, अभी बहुत हो गया यार, अभी वापस आ जाओ. अरे यार कुछ, are you even thinking? Have you even bothered कि भाई एक शहर से दूसरे शहर जाने? And I know lots of people, मेरे बचपन के दोस्त हैं, who have lived in the same house forever. They have not even moved buildings. Okay? Right. And I have changed cities, I have changed, और मेरा एक दोस्त, अच्छा दोस्त, वो बोलता है यार अभी बहुत हो गया, तू वापस आ जा. मैं यार यहाँ पे आऊँगा तो तू मेरे को क्या खाना खिलाएगा? वो तो 2 दिन में बोर हो जाएंगे हम मेरे से, फिर क्या करूँगा मैं? Exactly. So yeah, no, it's not easy. But how do we get rid of this guilt? How do you? मेरा तो simple है, and this is something very interesting that I heard from a friend. हम बोलते हैं ना मनबीर, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो. One of my friends saying कि मैं तो एक कान तक पहुंचने ही नहीं देता उस चीज को. Such a thick filter on both my ears. All that banter does not reach my ear. I pick up, I listen to whatever it is which is important for me. This can stay outside, and this is so important, Manbir, आजकल की date. No, it's not easy, लेकिन that guilt. I mean, I've been in Australia for over 25 years, but I still at times feel कि भाई मैं छोड़ आया, or I put the pressure, I put the burden back on my family. And we were lucky that we are comfortable, and despite that you feel well, so बाकियों का क्या होता होगा जो, हाँ, लेकिन दूसरी तरफ जो डिपेंडेंट है कि बाहर जाएंगे तो they will support the family, उनको कोई गिल्ट नहीं है, because when they do that it's a win-win. मुझे तो मनबीर honestly लगता है, because the Pandit ji I was talking to you just like 4 minutes ago, my mom, I was
having this conversation with mom, and she was like, उनके अपने बेटे ने US के लिए visa apply कर रखा है. He can't wait to step out of the country. So this is like an extreme hypocritical situation, right? If your child gets that visa, you will be more than happy, right? किसी और को बोलना आसान होता है, आ जाओ वापस. तो उनका क्या स्टैंड पॉइंट था भाई? वो तो पंडित जी हैं, उनको क्या तकलीफ है? पता नहीं मनबीर ऐसे ही बातों बात में क्या क्या कर रही हो, कितने साल. अच्छा, फर्स्ट ही स्टार्टेड ऑफ विद तुम्हारा दिल बुरा नहीं लगता तुम्हें? डोंट यू फील होम सिक? डोंट यू फील बैड? तो वो तो मैंने रैंडमली आंसर, एंड देन इज लाइक, यू नो, यू शुड कम बैक टू गुड़गांव और फरीदाबाद. इट्स ओके. क्यों भाई? कैसे पता? इट्स ओके, एंड दिस इज माय डिसीजन टू टेक. दिस इज माय फैमिलीज डिसीजन टू टेक. कल को मुझे अगर लगता है, आई विल डू व्हाट इज नीडेड ऑफ मी. लेकिन आप मुझे क्यों एक्स्ट्रा सोलिसिटेशन दे रहे हैं? दैट इज बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग. तौफीक कह रहे हैं कि इट्स नॉट देयर selfishness but the age old problem of our society not exposing our own emotional vulnerability that makes parents tell us that we are being selfish. और दोस्त की सुन के तो ना माइग्रेट करो ना घर वापसी. ठीक है. And Manjusha Bhaadra is here and she's saying there are many old people staying in old homes whereas their children are staying nearby. So it's very stupid for people saying that is come back. Yeah, thank you for supporting Chris, Manjusha. That's very good. Yeah, so you got a supporter there. Nah, this I have to admit, Manbir, my entire family, including my nani who's like sick now, but my masi, my dad and mom, they've been very supportive from get-go. Go to life, stay safe. They've never been any obstacle in my life. I have to admit that. That's good. So okay, so your friend handles it by not listening, जैसे नमिता कह रही है, selective hearing, and एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो. लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो रह जाता है. And but I think a lot of people want to move overseas, लेकिन जिनका नहीं होता है तो वो बोलते हैं कि भाई Exactly. ऐसा लगता है मुझे. आप अभी किसी भी यूएस कॉन्सुलेट में जाओ, लाइन लगी होगी लोगों की वीजा इंटरव्यू के लिए या वीजा के लिए. सो दिस मेक्स नो सेंस एट ऑल. पीपल इन इंडिया टेल मी, ओ वापस आ जाओ. आप अपने बच्चे शायद उस लाइन में लगे होंगे, और व्हाटएवर. लाइक मदर हैड टू गो टू द Argentinian consulate because I had received a postdoctoral fellowship from South America. So she had to go for my visa. तो आप सोचो, अर्जेंटीना के वीजा ऑफिस में भी there was a long line of people waiting for their visas to come through. So it's life, and it's your decision to take for your family. अगर मैं आपको कुछ बोलूं, I just don't have that place or the authority to comment what you should or should not do for your family members. Yeah, I agree. But yeah, I think यहाँ पे हम लोग आते हैं looking for better opportunities of education for the children, for maybe the lifestyle, for clean air, for less corruption that we face there, less discrimination that we face there. वो सब छोड़ के हम लोग यहाँ पे आते हैं. And I find it very funny कि यहाँ पे लोग रहते हैं and then they will say, यार वहाँ पे तो सब अच्छा है, the best prime minister. And I always ask them, then what are you doing here? So they want to live here, so that is another guilt that they are putting back on people कि हमारा भारत महान है लेकिन हम नहीं रहेंगे. तो आप चले जाओ. आपको किसने बेड़ियां बांधी कि प्लीज आप नहीं रहोगे तो ऑस्ट्रेलिया की जान चली जाएगी? प्लीज लीव द कंट्री. Yeah. Simple. Yeah. And Taufeeq has a point. Okay, so it's 9:59, so we'll another minute we'll be signing off from 89.3 FM. Lekin we'll continue for a couple more minutes here. 10 bajne pe I'll disconnect that. So thank you listeners for listening on 89.3. Please do tell your friends about that. Taufeeq keh rahe ki Pandit ji is probably prepping himself and trying to understand through you, Chris, how to deal with the missing his retirement insurance. and yeah, in fact I have seen that. मैं इंडिया गया हूँ तो वहाँ पे गुरुद्वारे के जो ज्ञानी जी हैं वो they want to come here क्योंकि they want to earn good money here. आते हैं तो they earn good money. But anyway, we are signing off from 89.3 FM and we'll be live on Facebook for another few minutes. We're talking to Chris Mallika Bhaadra and talking about the guilt that people face
when they migrate overseas. Just a question I have for Taufeeq though, Manbir. I agree he might be trying to understand the situation, but there are ways to put a question through. There are ways how you express your concern, how you express your curiosity, not just being openly blunt and shameless about things. रेनू कह रही है पॉसिबल वो अपने सन के लिए पूछ रही है वो कि उसे कैसे लगेगा. आई हैव सीन जब यंग पीपल डोंट लिसन their parents and move overseas, they ask these kind of questions. अब पेरेंट्स तो पेरेंट्स हैं, सबका सोचना अलग होता है. so yeah हो सकता है मे बी दे आर टेस्टिंग कि भाई हाउ इज माई चाइल्ड फीलिंग. वो भी जानने वाला है कि वो कभी सोचेगा आने का. शायद हो सकता है वो रिवर्स साइकोलॉजी. हेलो कुरियन इज वाचिंग अस फ्रॉम बॉम्बे. क्रिकेट का क्या स्कोर हुआ है? आई डोंट इवन नो. I'm not. You are there. No idea. But yeah, it's not easy. It's not easy to face this. It's a big burden that we carry. और हम लोग यहाँ पे भी जब भी आते हैं तो we are faceless. यहाँ पे आओ तो you're totally faceless. You don't have any history. अभी तो चलो फिर भी जो IT वाले हैं उन लोगों को it's the same. लेकिन when I came, I work in a different field, which was not recognized here. So I was faceless. And then you have to constantly prove yourself. It's a battle, constant battle. Because I came for my PhD, I was a woman of color, I had no friends, literally no friends. 10 साल लगे हैं मुझे to make some friends, to make a little bit of name in the community. Yep. Well, people, they will judge. But before you wrap up, Manbir, I'll have to tell you that we've got a new listener. My Masi is now also kind of very interested, and she said मैं अब हर हफ्ते सुनूंगी. So wow, just okay, that's good. So मासी का नाम भी होगा Moni Mallika. Moni, I hope you're watching. I hope you're listening to your niece complain about the world, and thank you for sending your niece to Australia. क्योंकि मनवीर आपने मेरी फोटो लाइक नहीं की. ऐसे हो ही नहीं सकता. नहीं किया आपने. वो पॉपअप नहीं होगी मेरे, नहीं तो मैं I make it a point. And so pop-up nahi hoga. You need to maybe check your settings. Maybe you blocked me on Facebook. Chaliye, thank you, Chris. And when are you coming back? Thank you. I come back next Sunday, so I land in Melbourne on the 19th. Okay, so chalo. Next week again we'll do it live from Delhi, and the week after you'll be back in mad Melbourne. Okay. You take care. Have a good night. Bye. ठीक है. ये हैं क्रिस मल्लिका बद्रा फ्रॉम कोकोनट चैट्स, एंड ये मेलबर्न से हमें हर हफ्ते शी जॉइंस अस, बट आज शी हैज़ बीन इन दिल्ली, सो वहाँ से हमारे साथ बात कर रही थी. एंड मुबीना कह रही एंजॉय योर ट्रिप क्रिस, थैंक यू फॉर ऑल दैट, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू फॉर स्टेइंग कनेक्टेड. प्लीज़ अपने दोस्तों को बताइए यार इस कार्यक्रम के बारे. टेल मी आज 2 घंटे कैसे बीते. मैं बीमार हूँ, ओके, आई एम सिक, बट स्टिल 2 घंटे I did the show without even realizing कि क्या हो रहा है. अभी मैं जैसे ही शो खत्म होगा तो I'll feel very sick. लेकिन yeah, I have enjoyed it. So how can you not tell your friends कि भाई बहुत अच्छी हम लोग बातें करने की कोशिश करते हैं, लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, अच्छे लोग जो हम लोगों को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं. And so please tell your friends, okay? You have a good night. Take care and look after yourself. The world is a naughty place, but look for the goodness in it. Bye bye. तिमीलाई कहिले पनि खोज्छु म यता र उता तिमीलाई, खै कस्तो बानी लाग्यो मलाई. बिर्सन सक्दिन अब म तिमीलाई कहिले पनि, सायद तिम्रो सुन्दरताले होला मलाई यस्तो. खोज्छु म यता र उता तिमीलाई, खै कस्तो बानी लाग्यो मलाई. खै कस्तो जादु गर्यो तिमीले मलाई. जहाँ पनि तिमी मात्रै, जहाँ जान्छु जहाँ हुन्छु त्यही मेरो सामुने. We have been joined by Parminder. Hello Parminder. तिमीलाई सधैँ देख्छु म, जहाँ जान्छु जहाँ हुन्छु त्यही मेरो सामु.